Hello student, today we will discuss about velocity. So in previous class we already discussed about speed, and if you know about the speed then you easily know about the velocity. So let's start velocity. The rate of change of displacement by a body is called velocity. So हमें velocity पढ़वा पूर्व हमें speed के टिके मने पकावा. तो speed रे तमे पढ़िथिलो. Speed is the rate of change of distance. Distance rate means time. The rate of change of distance is speed. In this case, the rate of change of displacement is velocity. The rate of change of displacement by a body. The body द्वारा जैसे displacement cover होची, ताको हमें velocity कहवा. That means velocity is mathematically equal to the rate of change of displacement upon rate means होची time. So it is going to compare format. How can velocity and speed are related with each other? How can we know that? If we know about the speed, then we easily know about the velocity. How can we say? We know that displacement is also a distance, short distance. Displacement is a vector quantity, which is a specific direction. So you know that speed is also a motion of the body. Velocity is also motion of the body. But distinguish between them, then we know that speed has no direction, but velocity has direction. So the difference speed और velocity रो. नाले speed वाले भी गति करवाटा, velocity वाले भी गति करवाटा. Difference है speed जे कोनो सी direction में गति करवा, किंतु velocity means वो specific direction में गति करवा. That means velocity it has a specific direction. So it is a vector quantity. Clearly बुझलो? तो मने रखो जे displacement जदि जेन पिला जानि छी बोले से velocity बुझला से समय जे कोनोसी डिस्टेंस जदि बॉडी कवर करबा बोले ताक कहै छै स्पीड. किंतु शॉर्ट डिस्टेंस मींस जदि गोटे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करबा सेते बोले ताक कहै velocity. For example, suppose this is 2 point A and B, and if a body moves from A to B, suppose this is V1 speed and suppose this is V2 speed. So in this case this body moves with no specific direction. So this speed is said to be only speed. But in this case the body moves from A to B with a specific direction. So V2 is called as velocity. So speed means distance upon time. Velocity means also distance upon time. But short distance upon time. Short distance. तो शॉर्ट डिस्टेंस जगह पे हमें लिखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्लियरली बुझलो? तो बुझबा मीनिंग काने कहले स्पीड जे कोनसी डायरेक्शन में गति करबाटा का हम स्पीड कहमा आ बॉडी का जदी पूरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में गति करबा सेते बेले से बॉडी रो स्पीड को हमें वेलोसिटी कहमा. से बॉडी रो मोशन के हमें कहमा वेलोसिटी बिकॉज़ इट मूव्स अलोंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो जदि हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में गति करूचे बेले से शॉर्ट डिस्टेंस कवर करूचे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट जेहेतु बोले स्पेसिफिक डायरेक्शन में गति करूचे तो डिस्टेंस जगह थिला बा शॉर्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्ट डिस्टेंस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट. सो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Similarly, velocity is also equal to distance upon time, but velocity by short distance upon time, and short distance is said to be displacement. So displacement upon time. Clearly बुझलो? And it is a vector quantity. Displacement with specific direction में जाउछे between the two initial and final point.
So velocity is also a vector quantity. And as displacement may be, as displacement may be positive, negative and zero. जेहेतु डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी पारबा, नेगेटिव भी पारबा, जीरो भी पारबा, because it is a vector quantity. If we move towards the 5 meter distance, आगे जीवा बोले डिस्प्लेसमेंट प्लस. If we move backward the 5 meter distance, आमे जदि पछके जीमा बोले डिस्प्लेसमेंट माइनस. एंड जदि आमे मूव ही नहीं करमा बोले डिस्प्लेसमेंट हबा जीरो, आमे डिस्प्लेस नहीं हबा. सो डिस्प्लेसमेंट जेहेतु वेक्टर क्वांटिटी, सो से रीजन का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हिसाब से पॉजिटिव ही पारबा, नेगेटिव भी पारबा और जीरो भी ही पारबा. किंतु स्पीड क्षेत्र में हम डिस्टेंस नौथिलु. अब डिस्टेंस जेहेतु गोटे स्केलर क्वांटिटी से जेकोसी डायरेक्शन में रहले भी तार डिस्टेंस रो वैल्यू पॉजिटिव ही थिबा. किंतु जेहेतु आमे वेलोसिटी केस में डिस्प्लेसमेंट नौछु, सब डिस्टेंस नौछु, तो सब डिस्टेंस जेहेतु ते वेक्टर क्वांटिटी जा डायरेक्शन अच्छे से रीजन पाई डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन हिसाब से डिस्प्लेसमेंट केते बेले पॉजिटिव होबा, केते बेले नेगेटिव होबा, केते बेले जीरो होबा. एंड एज डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सो वेलोसिटी आल्सो, सो वेलोसिटी is also positive, negative and zero. Ever what is the dimension and unit of velocity? And you already know about the dimension and unit of velocity in chapter unit and dimension in your first chapter. So इटा तो तुम जानी चाहो ना, खाली कहे हो जाए डायमेंशन, dimension of velocity. So if you find the dimension of any physical quantity or unit of any physical quantity, you must be know the formula of that given physical quantity. So in this case we find the dimension of velocity. So what is the formula of velocity? First we know about the formula of velocity. So velocity is equal to displacement upon time. So what is the dimension of displacement? Displacement is also a short distance, length. So dimension of displacement is L. And dimension of time T. So dimension of velocity is Lt minus. And if you introduce the mass, then we can return the dimension of velocity m0 Lt minus 1. Because m0 is 1. 1 into Lt minus 1 is Lt minus 1. There is no effect if we add m0. Then unit. What is the unit of velocity? Unit SI unit. SI unit. We know that velocity is equal to displacement upon time. देखो स्पीड रे खाली डिस्टेंस अपन टाइम थिला, किंतु से डिस्टेंस रे जदि मैं वेक्टर लगे देबी ले सेटा डिस्प्लेसमेंट ही जीवा. ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ी छ फर्स्ट चैप्टर ने. सो डिस्टेंस रे जदि तमे वेक्टर लगे देबो ले सेटा ही जीवा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इज वेलोसिटी. सो डिस्टेंस रो एसआई यूनिट होची मीटर और टाइम रो एसआई यूनिट सेकंड. सो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. And CGS unit of velocity is distance of CGS unit centimeter, time of CGS unit second. So CGS unit of velocity is centimeter per second. So clearly मन रखि थिबो जे फिजिक्स होची फॉर्मूला तुम जानी थिबो बेले बेले ही तुम सब जिनिस जानी पारबो. जे कोनोसी डेरिवेशन, जे कोनोसी न्यूमेरिकल यूनिट डायमेंशन जहाँ भी सब जानी पारबो. तो तुम प्राय तो सब पिला ट्राए करबो जे गुडे फॉर्मूला नोट खाता बनेबो. जहाँ भी जन दिन जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा गला से कॉन्सेप्ट जहाँ भी फॉर्मूला आसुची तुम से जिनिस के आगे नोट डाउन करथिबो खातारे. से जिनिस तुमको बहुत हेल्पफुल हेबा. सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, unit of velocity, dimension of velocity, and what is the relationship between velocity and speed. You know that speed has no specific direction, but it always the body in this case also move, and velocity is a specific direction, and in this case also the body is move.
अब आम इधर भी कही पारमा जे स्पीड इज इक्वल टू magnitude of velocity. That is velocity रो जदि हमें डायरेक्शन के हटे दमा और वेलोसिटी रो खाली मैग्नीट्यूड के कंसीडर करमा बेले से ओनली मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट जदि करबा तो सेते बेला हमें वेलोसिटी को स्पीड कही पारमा बिकॉज़ स्पीड हैज नो डायरेक्शन. तो जदि हम वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड फॉर्म के देखमा तो वेलोसिटी वाले भी गति करबाटा तो ई जदि गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन में गति करूचे ठीक अछि किंतु से डायरेक्शन के जदि हमें देखि करी खाली तार मैग्नीट्यूड के देखमा लेट्स से स्पीड समान ही पाबो बिकॉज़ स्पीड वाले भी गति करबाटा. तो स्पीड वाले गति करबाटा किंतु तार डायरेक्शन नहीं ना किंतु वेलोसिटी वाले गति करबाटा तार डायरेक्शन अछि किंतु जदि हम डायरेक्शन के हटे दमा बोले खाली गति करबाटा बुझा जीवा वेलोसिटी तो सेते बेले वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड को हमें स्पीड कहि पारमा जेते बेले से डायरेक्शन के जदि हम हटे दमा खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करमा then the magnitude of velocity is called as speed. ठीक अच्छे अब हम देखमा different types of velocity. Types of velocity. Types of velocity. तो देखो जदि तुम टाइप्स ऑफ स्पीड जानी छो बेले टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जानला संगे समान. तो तुमके कहा जाइथिला टाइप्स ऑफ स्पीड रो जे तुम फार्मूला माने पकौथिलो डिस्टेंस अपॉन टाइम. Types of velocity रो जे फार्मूला माने पकब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकॉज़ वेलोसिटी इज derived from displacement upon time. डिफरेंस किछि नै ना जे डिस्टेंस अछि वेलोसिटी रो जे भी डिस्टेंस अछि किंतु ई डिस्टेंस होचे शॉर्ट डिस्टेंस. तो स्पीड और वेलोसिटी रो टाइप्स जेन रहउचे पाखा पाखी समान रहबा बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट वेल भी गोटे डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस अब बड़ी शॉर्ट डिस्टेंस यदि कवर करबा ले ताका हम कहबा वेलोसिटी. तो देखमा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखमा तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जानबा अछि बेले तुमके फार्मूला माने रखबा पड़बा. तो फर्स्ट देखमा हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Uniform velocity. So if the body cover, if the velocity of a body, as definition like it, the velocity of a body is said to be uniform velocity if the body covers equal displacements in equal interval of time. Body समान displacement. Suppose if the body moves from A to B along a straight line, then if the body moves from A to B along a straight line, that is along a specific direction, then its motion is said to be velocity, not speed. Speed भी कही पारमा, किंतु exactly हमें कही पारमा velocity because ये जब मूव करूचे गोटे डायरेक्शन में मूव करूचे आ डायरेक्शन में मूव करबा बेला काटा में कहबा वेलोसिटी. आ डायरेक्शन जदी मूव नहीं करता जे कौन सी डायरेक्शन में मूव करथिले स्पीड किंतु जेतु गोटे डायरेक्शन में मूव करूचे तो हमें ताके कहबा वेलोसिटी. So at any instant suppose the body reach at B point, reach at C point, reach at D point, reach at E point, at any instant reach at A, G, H. Suppose this point is B dash. So while the body moves from A to B dash, we want to calculate the velocity of the body at every point. Suppose we want to calculate the velocity of the body at every point while the body moves from A to B. So suppose if the body moves from A to B at B point, it covers a distance 2 meters in 1 second. At C point, it covers a distance 4 meters
in 2 seconds. At D point, it covers a distance 6 meters at 3 seconds. At E point, it covers a distance 8 meters at 4 seconds. At point, it covers a distance 10 meters at 5 seconds. It covers a distance 12 meters at 6 seconds. And the body finally covers a distance 14 meters at H point in 7 seconds. So in this case, if we want to calculate the velocity of the body at every point, then the velocity of body is constant. We find the velocity or magnitude of velocity is constant. It is look like same as the uniform speed. Because velocity is equal to displacement upon time, speed is equal to distance upon time. तो हमें डिस्टेंस और टाइम को वेरी करूथिलु किंतु वेलोसिटी केस रे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे कवर करम अब डिस्प्लेसमेंट ही गोटे टाइप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस सो हमें देखा हमें कैलकुलेट करम एट दिस बी पॉइंट द वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मींस 2 upon 1 एट सी पॉइंट द वेलोसिटी इज 4 upon 2 एट डी पॉइंट द वेलोसिटी इज 3 upon 6 एट 6 upon 3 E point the velocity is 8 upon 4 and you calculate at every point then the velocity of the body at every point constant or same velocity of body at every point constant or same तो जेहेतु वेलोसिटी सब पॉइंट रे समान रहउची so this velocity is said to be uniform velocity and it is possible when the body cover equal displacement in equal interval of time because displacement और time के नहीं करी ही velocity है उससे displacement upon time so जदि equal displacement जदि cover करबा equal interval of time रे सेते बेले speed रो velocity रो magnitude सब जगह रे समान रहबा सेते बेले हम से वेलोसिटी के कहमा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट क्लियरली बुझलो एंड इट इज एक्चुअली पॉसिबल व्हेन द बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्लियरली बुझलो इक्वल डिस्प्लेसमेंट स्पीड रे बुझे छना देखो इन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर बॉडी बॉडी चलछे एंड टाइम 1 सेकंड बॉडी चलछे सरला तो क्लू the velocity of body at every point constant then its velocity is said to be uniform देखो इना हमें आगे भी ग्राफ करबा वेलोसिटी टाइम ग्राफ करबा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करबा किंतु एबे जस्ट टिके देखि दिछो रफली if we plot a graph between displacement suppose in meter and time in second then in case of uniform velocity the graph is straight line slope का जरा देखो because देखो जदि आपने 1 second 2 second 3 second 4 second 5 second 6 second एतकी था वो तो 7 second तो 7 second यार में डिस्टेंस के धरो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर 14 मीटर तो इन 1 सेकंड द बॉडी कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड द बॉडी कवर 4 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकंड द बॉडी कवर 6 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकंड द बॉडी कवर 8 मीटर डिस्टेंस एंड इन 5 सेकंड द बॉडी कवर 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट in 6 seconds the body cover 12 meter displacement and in 7 seconds the body cover 14 meter displacement so if we draw or join the all points then this point draw a straight line so this is ST graph and ST slope of star मारी को लेके देखिए slope of ST graph represent slope of ST graph
represent velocity. Slope of static graph represent velocity. There means slope का क्या जैसी जब में x axis थीटा के y axis थीटा तो dy upon dx था किंतु इना जाए तो डिस्प्लेसमेंट अच्छे हो t अच्छे बोला हम लिखी पारमा ds upon dt. The change of displacement with respect to time. In this case, the change of y with respect to x. In this case, the change of displacement with respect to time. And this is called slope. And this slope gives the mathematical value of velocity. तो मन रखिथिबो slope of static graph represent velocity. मन रखिथिबो. अब slope के हिसाब से टोना जैसी जेन पॉइंट में slope टाणबा আছে से पॉइंट टाने टाणबो प्लस स्लोप बाहरिबा. इरा तो मैं ऑलरेडी ग्राफ पढ़ला टाइम रे पढ़ेबी थाउ इतकी बहुत मन रखिथिबो. सो यूनिफॉर्म स्पीड ने भी देखुथिला जे डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दउथिला डिफरेंस खाली वेलोसिटी रो का जे डिस्प्लेसमेंट आइছে डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट डिस्टेंस आइছে तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आल्सो गिव स्ट्रेट लाइन स्लोप हला मन रखिथिबो. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड स्ट्रेट ग्राफ प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ठीक আছে. এটা ছিল তোমার यूनिफॉर्म वेलोसिटी. এবার আমরা দেখব ভেরিয়েবল ভেলোসিটি. তো ভেরিয়েবল ভেলোসিটি ইনা এখন বুঝাও. ভেরিয়েবল স্পিড তো বুঝিছ না মই এতে এক্সপ্লেন করবা জরুরি নাই না. ভেরিয়েবল স্পিড রে কানা থিলা যে স্পিড র ম্যাগনিट्यूड सब जगह रे अलग अलग थिला. If a body cover a large distance, in this case the body cover from A to B dash, then at any instant the magnitude of speed is variable. If the magnitude of speed is variable, then the speed is said to be variable speed. But in this case, the body cover equal displacement, so the magnitude of speed at every point constant. So this speed is said to be uniform speed. But if the body cover unequal distances, suppose 2 meter to 5 meter gala, 5 meter to 8 meter gala, 8 meter to 12 meter gala, 12 meter to tomar 14 meter gala, 14 meter to 15 meter gala, 15 meter to tomar 18 meter gala. That is, in this case the body unequally cover its distance. Initially 2 to increase by 3 meter, then finally also 3 meter increase, but last 4 meter increase. In this case 2 meter increase, in this case 3 meter increase, in this case 3 meter increase, or suppose in this case 4 meter increase. So distance is covered by the body in unequally distance cover होची in equal interval of time. तो टाइम समान थिले भी जेहेतु डिस्टेंस unequally cover होची, so every point the magnitude of speed is variable or different. If we calculate the magnitude of speed at this point, then in this case the speed is 2 upon 1, but in this case the speed is 5 upon 2, in this case the speed is 8 upon 3, in this case the speed is 12 upon 4. So if we calculate every point of the speed, the magnitude of speed is variable due to unequal displacement covered by the body. Due to unequal displacement covered by the body, the magnitude of speed at every point variable. So this speed is said to be variable speed. And if we calculate or draw a graph between displacement type graph in variable speed, then the graph is show a curve. Similarly as the graph between distance time, in case of variable speed, the graph produces curve. In this case also displacement type graph also produces a curve in case of variable velocity. तो देखो variable velocity means काना जदि हम ग्राफ बने माई साथी 1 रे 2 अछि ठीक अछि 2 सेकंड रे 5 अछि 5 मींस मजे के पले आसला 3 सेकंड राइट 3 सेकंड राइट 4 सेकंड 12 4 second 12 5 second 14 5 second 14 then 6 second 15 6 second
15. Then finally 7 second 19. 7 second 19. So if we join the point, then this point produces a curve. So you remember, in case of variable speed, the displacement time graph produces a curve, and the velocity of body at every point variable, then its velocity is said to be variable velocity. In our definition about the velocity of a body is said to be variable. If the body covers unequal distance, unequal displacement level. If the body covers unequal displacement in equal interval of time. खाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी रो का बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करूथिला जाद्रा कि स्पीड रो मैग्नीट्यूड सब जगह रे समान रहथिला, किंतु इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, so that the magnitude of speed at every point variable, so the speed is said to be variable speed. So this is variable speed. Then next we study about instantaneous speed. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. तो instant means मन रखिथिबो जे गोटे पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तबे सडनली जदी वेलोसिटी कैलकुलेट करबा के चाहउछ ले सेते बेले से वेलोसिटी के कोआ दिबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तमे जेंता कि पढिथिलो already discussed about instantaneous speed, and in case of instantaneous speed, the speed of the body calculated at a particular instant of time or at a particular point on the path when the body travel from a large distance, one point to another point. So in case of instantaneous velocity, here also the velocity of a body can be calculated at a particular instant of time. एंड मन रखिथे गोटे जिनिसटा इंस्टांट लागबा बेले सेते बेले टाइम इंटरवल सब बेले जीरो हेबा, इंस्टांट लागबा बेले टाइम इंटरवल सब बेले स्मॉल हेबा. इंस्टेंस टू जीरो दैट मींस बहुत स्मॉल हेबा, सर से टेंस टू जीरो आके जाउची, बहुत स्मॉल आके जाउची. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रे भी तमर टाइम इंटरवल स्मॉल हेबा, और टाइम इंटरवल स्मॉल हेले ही से वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Suppose the body moves from A point to B point along a straight line, and if the body moves from A to B along a straight line, that means along a specific direction, so its moment is said to be velocity. जे तोने डायरेक्शन में मूव करूचे से ताके जमे ताके वेलोसिटी कहलु. सो सपोज मुई E point रे वेलोसिटी कैलकुलेट कली, तार माने सपोज at this point X we want to be calculate the velocity of this body while the body moves from A to B. At this point we want to calculate the velocity of the body. So हठात ई पॉइंट रे कैलकुलेट करो, so time interval is tends to 0, that means time interval is very small. So मन रखिथिबो इंस्टेंटेनियस स्पीड रखा जे तमे A रू B के मूव करूछ, किंतु जे कोनोसी पॉइंट रे जदि तमे हठात वेलोसिटी कैलकुलेट करबो, जे कोनोसी गोटे पार्टिकुलर पॉइंट रे जदि तमे हठात वेलोसिटी कैलकुलेट करबो, आ पार्टिकुलर पॉइंट रे जदि हठात वेलोसिटी कैलकुलेट करबो, the time interval is tends to small or very small, tends to 0 or very small. How हठात कैलकुलेट करूछ, so its velocity is said to be instantaneous velocity. तो instantaneous speed जे बुझिथिला से instantaneous velocity बुझला से समान. So लिखि दियो the velocity of a body is said to be instantaneous velocity if it calculate at a particular instant of time or
at a particular point where time is very small. Mathematically हम देखमा जो we know that velocity is equal to change in displacement. देखो distance रो ऊपर वेक्टर डाली that means it is represented as displacement. Change in displacement upon changing time. Because हमें velocity is equal to जाइन चुन distance displacement upon time. So instantaneous velocity also displacement upon time. But in case of instantaneous velocity, the time interval is tends to 0. That means if a small value represent, then this small value is represent with dt. So in this case, time interval is 0. So time interval is represented as dt because time interval is small, very small. So small value can be represented as dt. So time interval is represented as dt. And with respect to time interval, with respect to this small time interval, the displacement also small because small time रे body हठात calculate करूँ चलो का displacement भी small है. So as the time interval is small, with respect to this time interval, the displacement of the body also small. So this is the formula of instantaneous velocity. Instantaneous velocity. सरला हाँ average जिनिस का मैं average velocity रा formula बाहर करूँ average नहीं करूँ देखो so clearly मुझे ना पहले हमें देखना average velocity. Average velocity. So average velocity means भी बहुत सहज है जब तुम उठे पॉइंट जब आउटे पॉइंट के लार्ज वेलोसिटी द्वारा मूव करूछ बोले तमर वेलोसिटी केने अधिक आबा केने कम आबा जब तुम सब धर जाउछ उठे हमर कॉलेज रु तमर घर को जाउछ प्रगति कॉलेज रु घर पे जाउछ ले समान वेलोसिटी रे तो नहीं जाय पारो केन जगह में वेलोसिटी अधिक आबा केन जगह रे कम हेबा दैट मींस यू मूव्स in your home, you move towards your home with different velocity. और से different velocity रो average क्या में कॉमा average velocity. And average velocity means क्या ना जो velocity is equal to displacement upon time. Average velocity is total displacement upon total time. जैसे तुम average speed पढ़ी चो average speed रे पढ़ी चो total distance upon total time is average speed. Similarly, average velocity is also equal to total distance जगह दिखाली लगा total displacement upon total time. So speed रो जो भल कर में बुझे देथिली देखबो से speed रो जदी जन पिला बुझी छै बेले इनो सब बुझला से समान खाली average speed जगह थी average velocity अछि. So the velocity of a body is said to be average velocity. The velocity of a body is said to be average velocity or mathematically equal to the velocity of a body is the average velocity of a body is defined as like 1 half and it mathematically तुम्हें लिखो. So the average velocity of a body is equal to ratio between total displacement to total time. दावेटा बहुत गुला पिला कंफ्यूजन जे स्पीड रो तो जेहेतु स्केलर क्वांटिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीवा s1 + s2 टोटल टाइम ही जीवा t1 + t2 किंतु जेहेतु एवरेज वेलोसिटी मींस वेलोसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ठीक अछि s1 / s2 हे जीवा किंतु से डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव ही पारबा में भी माइनस ही पारबा बिकॉज़ velocity is depend upon the direction of displacement. तो देखो हम बुझा दो छे if the body cover
S1 डिस्प्लेसमेंट इन T1 टाइम देखो इने वेक्टर लागला कि मुई डिस्टेंस को कहूँ डिस्प्लेसमेंट and that body cover S2 displacement in time T2. Then average velocity is equal to the ratio between total displacement to total time. That means total displacement in this case in T1 time, the total displacement covered by the body S1, and in T2 time the displacement covered by the body S2. That means total displacement is S1 upon S2. Then total time T1 upon T2. This is the formula of average velocity. But in this case, maybe according to your numerical or condition of your numerical, you maybe subtract this value. But naturally, if we add or represent with vector, then this formula of average velocity is S1 plus S2 upon T1 plus T2. आमे जते बेले न्यूमेरिकल करमा एवरेज वेलोसिटी रो अलग अलग फार्मूला आसबा डिफरेंशियल केस में जदी हमें बाहर करमा बेले एवरेज वेलोसिटी ता तम सब बेले डिस्प्लेसमेंट माइनस हबा और टाइम भी माइनस ही करी बाहरिबा तो सेना मैं न्यूमेरिकल केस में पकेबी किंतु एज फॉर दिस डेफिनेशन द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम. So this is average velocity. Then आगे देखमा आजी यूनिफॉर्म सॉरी आमे एबे देखमा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन मींस किछि नै ना तमर वेलोसिटी के जदी तमे बढ़ेबो सपोज धरो तमे गुटे पूरा भीड़ जगह जाऊँ तो तुम वेलोसिटी बहुत स्लो अच्छे तुम धीरे धीरे जाऊँ किंतु एनएच रोड रे तुम वेलोसिटी बढ़वा कि नहीं तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू कंडीशन तुम वेलोसिटी इंक्रीज करूछ तुम भीड़ जगह तो तुम वेलोसिटी के तुम बढ़े नहीं पार किंतु कंडीशन हिसाब से तुम एनएच रोड रे तुम वेलोसिटी के बढ़े पारुछ तुम तो वेलोसिटी के इंक्रीज करवाटा के ही कहा जायसी एक्सेलरेशन मन रखिथो दैट मींस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी is called as acceleration. That means सब velocity बढ़वाटा के acceleration को आना जाए velocity change हवाटा के को जाए acceleration तो velocity जन change करू छ ताके को जाए acceleration तुम जदी कमे दबा पहले से acceleration इज बा नेगेटिव acceleration because तुम velocity कमी गला तुम जदी velocity के बढ़े दबा पहले से acceleration के को जाए पॉजिटिव acceleration तार माने velocity के कम अधिक करबो with respect to time that is called acceleration. और सेटा कंडीशन हिसाब से करा जीवा वेलोसिटी के केन जगह रे अधिका करबो केन जगह ने कम करबो सेटा कंडीशन हिसाब से करा जीवा तो वेलोसिटी रो चेंज के कह जेसी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन केते बेले कहबो जेते बेले वेलोसिटी इज इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेते बेले पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन द एक्सेलरेशन इज टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन किंतु एक्सेलरेशन काहे कह जीवा वेलोसिटी के चेंज करबाडे को जे एक्सेलरेशन केन जगह ने अधिका पड़ेबो केन जगह ने कम सो द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. Mathematically, acceleration is also a vector quantity is equal to velocity upon time. जब स्पीड के तो मैं खाली v लिखुथिला बिकॉज़ वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड के स्पीड को आइसी किंतु वेक्टर लागला बेले से वेलोसिटी के बुझेबा बार बार बुझेनी स्पीड और वेलोसिटी समान स्पीड बेले भी गति करबाटा वेलोसिटी बेले भी गति करबाटा स्पीड बेले किंतु जे कोनोसी डायरेक्शन में गति करबा तार स्पेसिफिक डायरेक्शन नै ना किंतु वेलोसिटी रो काजे गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन में गति करबा सेते बेले वेलोसिटी को आजिबा और से स्पेसिफिक डायरेक्शन का जे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जगह लगा जाय छे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट होचे गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन रो डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी ओ छाड़ा बेसी बुझाब तुम तो बुझुछ नहीं बुझी पारबा वीडियो रिपीट करबो ताहा देखमा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम एने वेक्टर लगाला एबे देखो एक्सेलरेशन जेहेतु वेलोसिटी में भी पॉजिटिव 0 नेगेटिव होचे तो एक्सेलरेशन भी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0
तो लिखी देखो इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव and 0. It is also a vector quantity. It is a vector quantity. Then acceleration का हमें पॉजिटिव acceleration केते बेले कहना पॉजिटिव acceleration केते बेले कहना जेते बेले बॉडी रो वेलोसिटी का भर कर बुझ बॉडी रो वेलोसिटी के कम अधिक चेंज करबा रे को आदि एक्सेलरेशन तो से वेलोसिटी रो जदि इंक्रीज हबा बोले सेते बेले तार एक्सेलरेशन के कह जावा पॉजिटिव एक्सेलरेशन सो इफ द वेलोसिटी ऑफ body increase with time then is said to be positive acceleration and negative acceleration means what? If the velocity of body decrease if the velocity of body increase with time then positive acceleration if the velocity of body decrease with time then it is called negative acceleration तो बहुत सहजा जिनिस में किछि नहीं नहीं नो खाली तुम ध्यान देकर बुझो देन हम पढ़वा यूनिट एंड डायमेंशन formula of that unit dimension of that so acceleration is equal to velocity upon time so dimension is velocity lt minus 1 time t that means dimension of acceleration is lt minus 2 if we express with mass then m0 l1 t minus 2 this is the dimension of acceleration which you must already study unit formula velocity रो unit ऐसा unit खाली में लिखी होचे हां तो सीधे unit भी लिख ले चलबा नो प्रॉब्लम ऐसा unit velocity रो मीटर पर सेकंड और टाइम रो सेकंड दैट मींस मीटर सेकंड माइनस 2 सीधे unit सेंटीमीटर पर सेकंड टाइम रो सेकंड सेंटीमीटर सेकंड माइनस